we just listened to the school prayer. We said the prayers, but now it's time to know the meaning of the prayer. Through our prayer, we tell our Creator and Lord that we are bearing witness to our reason for existing. Our dependence upon God's strength and wisdom not only lead us to a unique spiritual union with our Almighty, but we are facing God and acknowledging that He is our Maker, a truth we can all forget too often. The essence of God is unknowable, but we can gain knowledge of Him through His manifestations. Not only do we try to understand God, we also need to show our love towards Him. The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential. These are the keys that will unlock the door to personal excellence. Keeping these words in mind, our laborious children burn the midnight oil to be able to score 10% marks in various subjects. The work done meticulously by our students is admirable and complimented by all. The glorious performance of classes have put in hours of tiring effort to achieve flawless and faultless performance. Excellence is not an exception, dear parents. It is a prevailing attitude. It is the gradual result of always striving to do better and better. They say where focus goes, energy flows. With consistent focus, willpower, and yearn for progress, the students have shown exhilarating responses and received amazing performances in the various subjects. Setting goals is a first step in turning the invisible into the visible, and our students have showcased that. Dear parents, now we are going to have the procession ceremony wherein our brilliant students will be leading the way. Dear parents, now it's time to welcome those meticulous students and see what amazing performance they have made throughout the year. Let's welcome our ardent students with a huge round of applause. Parents, isn't it amazing that these kids have given a huge reason for us to celebrate? What a mind-boggling way that these small kids are doing wonders and achieving success throughout the day. Hats off, dear children, for coming across as triumphant and path-breaking wins that you have made for yourselves.
our little wonders walking away and showcasing that how brilliant they have been throughout the year. Such amazing children that move and show that they have been so mind-boggling, and their responses throughout the year was exhilarating. Dear parents, can we have a huge round of applause for dear kids? These children have proved that determination can lead to success, and any goal that's worth completing is not going to be easy. Dear parents, the thunderous applause must not stop. Can we please have a huge round of applause for these brilliant and ardent kids who are walking through the auditorium and showcasing that how amazing they have been throughout the year in their academics and various other zones. The students who have proved that dreaming, wishing, and achieving is never easy, but have proved themselves and they have proved their worth, and that's how these achievers are working towards us. Please give a huge round of applause, parents. The thunderous applause shouldn't stop. Now we are having the all-rounder students of KG, followed by the brilliant stars of the kindergarten section. The little tiny tots that have proved themselves and that have proved that the milestones get achieved by any. Thunderous applause, dear parents, is what we need in the auditorium right now. Tiny tots, those who have performed amazingly well and shown that they can achieve anything, whatever they dream. What a magnanimous affair that it was. It was great to see our tiny tots who have achieved St. Pencil marks and those who have proved themselves in everything. Thank you, dear parents, for supporting our little ones with your round of applauses and with your constant cheer. World parliaments are needed to establish regulations and directions consistent with World Constitution for proper functioning of the several parts of the world government. The family system today, which is vital for the survival of the mankind, is on the rocks, and its absence can turn the world into an abyss. Therefore, in today's World Parliamentary Session, we will be discussing about instilling family values that can protect and guide us against making hurtful decisions in the future
and teach us the sense of right and wrong. Thank you. Jai Jagat everyone! In the world of today, family is paramount and family values are essential. Our family gives us a sense of belonging and support, something we can rely upon no matter what comes our way. Family unity brings incalculable benefits. Sadly, modern day and age witness our degradation in this value system. Why? The reasons could be many. Disconnect between family members, excessive phone use, lack of communication and habits, etc. Therefore, it is important that we bring families together via this value system. If everyone in the family, especially children, are able to imbibe family values, the nation will be on the road to peace and prosperity. If anyone gives a choice between a service to God and a service to parent, choose to serve your parent in serving the Lord. Today, the delegates of different countries are gathered here to discuss about family unity and different family value system. Delegates who wish to deliberate may raise their placards. Member Nation USA, you may take the floor. Thank you, Speaker, sir. USA has been headed strong when it comes to promote family values. There's a reason why people from all over the world live in harmony in the USA. The modern American family believe that love, care, sympathy, and empathy should reflect in all the members of the family. The advancement of civilization now requires the full participation of both men and women in the family. Thank you. It gives a great deal of hope that even for futuristic nations like the USA, the core family values remain intact. Member nations who want to put forth their point kindly raise their placards. Russia, you have been recognized. Thank you, Madam Speaker. The concept of family holds the highest importance amongst individuals in Russia. Relatives usually have a very close relationship and are interdependent, helping one another in times of need. Extended family members are also emotionally involved and support the household. The grandparents
a big part in raising children and hold a highly respected position in the society. And we also believe a family that prays together stays together. Thank you. The values incorporated by the Russians into their children are truly admirable and noteworthy. Delegates who wish to deliberate further may now raise their placards. Member Nation France, you are recognized. Thank you, sir. The type of family common in France is a nuclear family. 68% of the children live with both their parents under the same roof. Then there are single parent families. 21% of the children live with one of their parents and 11% of the children live in a reconstituted family. Equality and unity in family is highly valued to the French culture. We believe that the children's prosperity in this world depends upon the good pleasure of parents, and without this, they will be in manifest loss. Thank you. Thank you, France. Your ideas about the concept of family are remarkable. Delegates who wish to deliberate further may now raise their placards. Delegate from Saudi Arabia, you may put forth your views. Thank you, Speaker Ma'am. Family is a center pillar of the Saudi Arabian society. Many families live with the extended family members. Nuclear families are more common in urban areas. Although the Saudi Arabian family is traditionally patriarchal, women hold the considerable say in the home. The relationship between parent and child is very strong. We believe that husband should respect his wife as the mother of his children and his devoted companion. He should consult her before taking any family decision for maintaining family unity and happiness. Thank you. Thank you, Saudi Arabia. Your spirit towards family unity inspires us. Delegates may now raise their placards. Member Nation Japan, you may take the floor. Thank you, Speaker Sir. Family is the foundation of a Japanese society. Obligations and responsibilities are deeply connected within their families. The traditional household structure is known as I,
which refers to a multi-generational household with a patriarchal head. It emphasizes that a man should understand his responsibilities as the husband and the father, the protector and the provider of the family. Japan's official family registry regards the household to be the basic unit of the society rather than the individual. Thank you. The words need to adopt the art structure of living in Japan. Humanity can definitely learn from their culture and inculcate such virtues among the young generations. Now, member nation India, you may express your view. Thank you, Speaker Sir. Family is an integral part of Indian culture and society. In India, family unity and values play a crucial role in shaping the lives of individuals. Proper upbringing of a child is the chief responsibility of the mother. The father possesses both qualities of being loving and just towards his family. Family members hold a deep respect for elderly who are highly valued for their wisdom and experience. Family values such as honesty, loyalty, and compassion are deeply ingrained in the cultural fabric of India and are passed down from generation to generation. It is the country where three generations still live happily together. Thank you. We strongly agree that the family unity is an essential foundation of a successful life. It's a pleasure to know that the family is a priority for all the Indians. Now, which country would like to volunteer? Delegate from City Montessori School, India. You are recognized. Scientists believe that family unity should take priority over any other consideration. It involves full and frank discussion among the family members to avoid domestic conflicts. CMS strongly believes and insists that Valentine's Day should be celebrated as National Family Solidarity Day. CMS celebrates Parents' Day and Grandparents' Day to instill respect for their elders from the very tender age. The school emphasizes that the family members must be taught all the virtues and the atmosphere within a family should not be dictatorial, but there should be humble fellowship. Only a loving family brings
comes, illuminated and blessed. Thank you. Very true. House truly appreciate the efforts taken by City Montessori School for instilling family values and unity among the learners of today. The crux of the entire agenda is to bring the people across the world in a harmonious environment. It was enthralling to see that. Our discussions helped us to know that the countries are realizing the significance of family unison, and they are doing their best to inculcate family values in the upcoming generation. That is the need of the hour. Thank you. The house is adjourned till we meet again. Jai Jagat. Love is sweet, love is kind. Love comes from a family of mine. Let us give a huge round of applause to these lovely children. Certainly, in today's day and age, we absolutely need a democratic, non-military government based on establishing peace and solving major concerns. Strong parliaments are a cornerstone to democracy. They represent the voice of the people. Pass laws and allocate funds to implement laws at their best. Ambition is a path to success, and persistence is a vehicle they arrive in. Our kids just needed a burst of motivation, and they made everyone believe that if they put their heart and soul, mind into even our smallest acts, anything and everything is possible. Patience and persistence make an unbeatable combination for any accomplishment. The ever so braving kids of class 2 hustled each day, dear parents, and they pushed themselves to the next level.
we are now going to hold the graduation ceremony for the dear students of class 2 who are moving to the next level, hustling their level to class 3. And we are proud of that. Dear parents, let us hold a huge round of applause for dear students of classes 2 who are moving their way up to classes 3 in our very own building of CMS Rajajipuram 3. Dear parents, can we have a huge round of applause for those kids who are moving to class 3 from classes 2. We now await the graduation ceremony for those amazing kids of class 2. Dear parents, we also expect that as soon as these lovely kids arrive in the auditorium, you welcome them with a thunderous round of applause. That is the least that we expect from you. Your support and constant motivation will guide these students and will help them to do their very best. Just a few more minutes and we'll soon have those vivacious and brilliant kids amongst us. We require just a small level of patience from you, dear parents, and the kids will be walking among us, and these ardent, brilliant holders will be right among us. Let's welcome our dear fantastic students who are moving to class 3 from classes 2. Let's welcome those gleaming glories who are making their way up to class 3 after sheer hard work and persistence. The glistening stars of classes 2 who are going to classes 3, and they have worked their way hard to move there. We now have charming captivators of classes 2 who are moving right among us, and they are moving to class 3 very, very soon. Dear parents, can we have a huge round of applause for these amazing and delightful students? The dreamers and the candy kids who have dreamed their way through classes 3 now. We expect a huge round of applause, dear parents. The auditorium must thunder with the huge round of applause from you. The ardent stars of classes 2, the gleaming glories, the euphoric kids who are paving their way now in classes 3. We are proud of you, our bedazzling stars. We are really proud of you, our amazing kids, that we are moving to classes 3 by your sheer hard work and constant persistence. Are you ready? The fierce, the brightest, and the smartest minds who are walking among us, and we now welcome them here right in the auditorium. The distinguished, the magnetic efforts that the kids have put, and now they are now moving into the classes 3 with wholeheartedly and a lot of the ferocious tigers of classes 2 are now soon be moving to classes 3. We are so proud of you, dear kids. We are amazingly happy you are soon going to move in class 3. Dear audience, we now expect a thunderous response for the bedazzling stars that are walking right among us. Please, can you give a huge round of applause for the bedazzling kids of classes 2G now? Dear parents, they say that the brilliant
child is locked inside every child. It is absolutely veracious that our marvelous students have left no stone unturned. It's time now that we welcome the kindergartens and the tiny tots. The astounding children have made their way and soon would be moving to classes 1. These children showcase that success is no accident. It is the hard work, perseverance, dedication, and most importantly, the self-discipline that makes any leader. Are you ready? The clapping must not stop, dear parents. Let's give them a huge round of applause, dear parents. They're moving to class 1. They have made their way from KG up to class 1. Amazing and lovely to see that these kids are making their way up to grade 1 very, very soon. Can we get a huge cheer, dear parents, for these amazing kids? Astounding kids making their way up to grade 1, showcasing that success is not a lie. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you The will to win, the desire to succeed, proved by our little wonders. Dear parents, there is a famous Chinese proverb that says, pearls don't lie on the seashore. If you want one, you must die for it. Our children have actually proved that to be true. And they have brought several laurels for the school. This ceremony is basically to entitle and to award those brilliant minds. Teachers are our ideals. They inspire us each day and make us strive towards the route of success. They equip us with the power of foresight and propel us with sagacity. On that note, it would be our pleasure to heartily welcome our respected Principal Ma'am for enlightening the audience with her words of guidance. Respected Principal Ma'am, if we can have you on the stage for guiding and motivating our dear audience with your lovely words.
A very warm welcome to all our distinguished guests, our respected parents of our talented students, benevolent teachers, and our dear students. My sincere gratitude to our most respected founder manager, Dr. Jagdish Gandhi, our most respected founder director, Dr. Mrs. Bharti Gandhi, Professor Geeta Gandhi Kingdon, Managing Director and President of City Montessori School, Superior Principal and Head of QAID, Mrs. Susmita Ghosh Ma'am, and our most honorable Senior Principal, Mrs. Nisha Pandey Ma'am. My sincere gratitude to all of them. I would like to very warmly welcome all of you, those who are present here. We are greatly honored to have you all. I certainly can assure you that your presence here this afternoon is a source of great motivation and enlightenment to the entire school. After our eager waiting and tireless preparation, this auspicious day has finally arrived. Before moving on, I am delighted to thank the presence of such a personality who hardly needs any introduction. I would like to welcome our chief guests for today, mother of Mishika Nigam, class 2, and mother of Rudransh, class kindergarten, who are the all-rounder students of the year. I would also like to warmly welcome Mrs. Kanika Kapoor, ma'am, principal of United World Campus, City Montessori School. We are extremely delighted and honored to have you all here at our Divine Seminar and Report Card distribution. Time flies at a fast pace. It feels like yesterday when we were preparing for the inauguration of our campus. And now we are about to begin a new session, and we are also beginning classes 3, 4, and 5 from the upcoming session of 2023-24. Rajajipuram 3 is the newest and the youngest member of the CMS fraternity, the school that is globally recognized for offering best class education. For decades, CMS has established itself as a premier institute for learning, providing international quality education, building the complete personality of our students, whether it be holistic or spiritual, or when it comes to academic education, and also helping students in deciding their career goals. And our campus has added yet another feather to the ever-growing CMS family. We at City Montessori School, students a total experience, and we wish to give them an experience where they excel in academics, participate in school activities with enthusiasm, yet are able to actively involve themselves in community-related projects. Like other great institutions, we have our dreams, ambitions, and aspirations, and how to convert them into tangible realities. Learning by doing is the ideology that we are willing to carry. The happenings at CMS Rajajipuram 3 this year tries to reflect on the same. As very rightly said by Swami Vivekananda, arise, awake, and stop not until the goal is reached. This is the ideology on which our students believe in. True to the dictum of learning by doing, all our children from pre-primary to the primary grade learn through practical application of concepts. This also speaks volumes for the international recognition of the curriculum which we follow at City Montessori School. Our students of CMS Rajajipuram Campus 3 have added many accolades to their credit. Our little ones participated in Funathon,
sports meet organized by CMS Rajendranagar campus, and the Tinny Tots were recognized for their talent and wonderful performance. Aradhya Avasthi of Class 1 bagged the first prize and a gold medal for Glamland. Can we clap for Aradhya Avasthi? Samarth Jaiswal of Class 2 bagged the second prize and a silver medal in the event Fast and Furious. Our students of Class 1 also went for the alumni competition in the Literary Fest organized by CMS Innovation Wing, and they bagged the first prize among all the campuses of CMS. Atifa Hashim of Class 1 bagged the second prize in the Sci-Fi competition. It is an inter-school competition organized by CMS United World School, where around more than 40 schools participated in the competition. She enacted the role of a famous scientist, Miss Marie Curie, and won the judges over. Ojasvi Srivastava won a special mention prize in an inter-school dance competition, and we are very happy to share that Ashna Singh of Class 1 again bagged the first prize at the State Mahotsav Rangshale, Gomti Nagar. Her achievement is also recognized by various media sources. Activities like story narration, role play, reading and recitation have been benefiting our kids in the real sense. They have been able to construct meaningful sentences where they are grammatically correct on their own. It has been nothing but a commendable journey throughout this session. Spoken English is something of great substance, and we are laying extra emphasis on it as we intend to prepare global leaders for tomorrow. I hope you all enjoy each and every nuance of our program today as much as our students have worked hard to prepare it. Thank you so much for showing your gracious presence in our Divine Education Seminar. I would now like to take this opportunity and invite on stage our most respected founder director, City Montessori School, Dr. Mrs. Bharti Gandhi. We very warmly welcome you, ma'am. Let's have a huge round of applause for our most respected founder director. Once again, a huge round of applause for ma'am. लाइटें बंद कर दीजिए. I want to see the most honorable faces of my dear parents. परम आदरणीय हमारे टीचर्स, बच्चों की पहली टीचर होती है माता जी, जो हमारे सामने बैठी हैं. उनके लिए हम लोगों को जोरदार ताली बजानी है. हमारे बच्चों के दूसरे टीचर हैं पिताजी, उनके लिए भी जोरदार ताली बजानी है. बजी नहीं कुछ खास, वो हेड ऑफ द फैमिली भी होते हैं ना, तो जबरदस्त ताली बजनी चाहिए. एक लेडी थी, तो हमारे में और गांधी जी में बहुत लड़ाई रहती थी, क्योंकि वो कहते थे हम बड़े हैं, हम कहते नहीं हम बड़े हैं. अब बताइए क्या करें. अब एक परिवार में अगर दोनों बराबर हैं तो आखिरी डिसीजन किसका होगा? बड़ा मुश्किल. आपके यहाँ तो होता नहीं होगा इस तरह का कोई घमासान. होता है सभी, क्या होगा. तो फिर एक महिला मिली हमको,
तो उनसे हमने कहा ये सब क्या मुसीबत है, शादी करो तो मुश्किल, गुलामी करनी पड़ती है, और ना करो तो मुश्किल। तो लोग आगे पीछे घूमते हैं। क्या करें, करें तो करें क्या। तो उन्होंने कहा डांट पड़ी। उन्होंने कहा देयर हैज टू हैव वन हेड ऑफ द फैमिली एंड दैट इज द फादर। अपने तो ऊपर घड़ों पानी भर गया। आप अनुवाद समझ लीजिए। उन्होंने कहा एक परिवार का कोई ना कोई एक तो हेड होना ही चाहिए। अब प्रिंसिपल ना हो स्कूल की, या 2 प्रिंसिपल बना दीजिए, कैसे चलेगा स्कूल। तो भैया उन्होंने जो डांट बताई, देयर हैज टू हैव वन हेड ऑफ द फैमिली एंड दैट इज द फादर। तो भैया उस दिन से हमारे घर की लड़ाई खत्म हो गई। माना ही पड़ा कि पिताजी ही हेड हैं और हम सब हेड हैं। अब कोई आजकल की पढ़ी लिखी लड़की ये मानने को तैयार नहीं है कोई? हाथ उठाओ कोई, या तो मानने को तैयार। अच्छा, ना हाथ उठाओ तो ये मानने को तैयार कर दो, इस पे हाथ उठा दो। तुम क्यों खड़ी हो मां? ये बन गई हेड। तो इस बात पे हाथ खड़ा कर दो कि यू थिंक फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। मिस्टर गांधी बहुत हंस रहे। बेचारों ने सारी जिंदगी पटक खाई, पटकी। तो आप हाथ उठाइए, कौन लोग मानते हैं फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली? उठ रहे धीरे धीरे, ऐसे कर करके। थैंक यू। तो आज हमारी गांधी जी इस सभा ने मान लिया कि फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ही इज वेरी हैप्पी। क्योंकि सारी जिंदगी झगड़ा ही हुआ, बाद में ठीक हो गया। कई लोग कहते हैं कुछ मामले में फादर हेड है और कुछ मामलों में मदर हेड है। इस पे कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए। इस पे सब लोग तैयार हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। झमेले का समाधान हो गया। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नर इज हेड, देन चीफ मिनिस्टर। हाँ या ना? मालूम नहीं है। वो लेडी गवर्नर हेड है। अब बताओ क्या करें? तो अल्टीमेटली वही फिर आ गया छूमंतर कि फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। बच्चों से पूछिए किसको ज्यादा प्यार करते हो? अच्छा, सच्ची बताओ, क्या बताएंगे? हाँ, पॉलिटिशियन होते हैं बच्चे, कहते हैं दोनों को। हमने कई बार उनको फुसला के पूछा, अच्छा बताओ, पहले बताओ किसको ज्यादा प्यार करते हो? मम्मी को देख रहे पर कह रहे दोनों को। देख रहे मम्मी को, बता रहे दोनों को, क्योंकि बाजार तो पापा ही ले जाएंगे, है ना। अठन्नी तो पापा ही देंगे, मम्मी तो कंजूस। बस रोज हलवा खा लो, पापा कुल्फी खिलाएंगे,
बच्चा अपना खूब मतलब जानता है और दोनों को क्या करता है बताइए ना। दोनों को क्या करता है, प्यार करता है, ठीक है ना। पिता लोग नहीं बोलते हैं, सब माता ही बोलती हैं हमारे यहाँ। तो एक वो पिक्चर आई थी, उसका नाम था मैं चुप रहूंगी। तो आज पिताओं के नाम से रखना पड़ेगा मैं चुप रहूंगा। आप लोगों को तो ज्यादा ही बोलना चाहिए, बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। बच्चों ने देखो बोल दिया। हाँ, आप समझ लीजिए, बच्चे खूब जानते हैं। इनके पेट में कई लोग बताते हैं कौन बैठा है, गाड़ी वाला बैठा है। अब सुनिए, आप यहाँ क्यों आए हैं। पंचायत हो गई बेकार की। आपको यहाँ दीदी ने क्यों बुलाया है। आज है ये स्पिरिचुअल एजुकेशन सम्मेलन, आध्यात्मिक शिक्षा का सम्मेलन। तो आप आके बैठे हैं, बहुत महान है, इतना चुप बैठे हैं। मैंने तो जिंदगी में ऐसे पेरेंट्स नहीं देखे। जब भी आते पेरेंट्स चक्कर पकड़ पता नहीं कौन सी दादी नानी की बातें करते। पर आज आप सब लोग के पास एक फार्म दिया गया है। किस किस को मिला है जरा दिखाइए हाथ ऊंचा करके। हमारी बन्ना दीदी ने आगे के लोगों को तो दिया ही नहीं, पीली साड़ी वालों को कह रही हमें नहीं मिला। तो ये आपको भरना है, इसे पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है पीली साड़ी वालों को नहीं मिला, आपको तो मिला है। पीली साड़ी वालों को तंग कर रहे हैं हम लोग आज। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप पल्ले झाड़ कथा में नहीं आए हैं। यहां से कुछ आपको लेके जाना है, पल्ले में कुछ बांध के लेके जाना है। तो अब वो शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, जिसे आप पल्ले में बांधेंगे। हालांकि शुरू पहले से ही हो चुका है। बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया था। फैमिली यूनिटी के बारे में वर्ल्ड पार्लियामेंट करी थी। मैंने गांधी जी तो थोड़ा लंबा ही बोलते, मैं तो आज जरा पता नहीं क्यों लंबा बोल रही हूँ। चलिए, भाग रही हूँ मैं जल्दी से। बस ये कह कर के भाग रही हूँ कि गांधी जी की टॉक से मैंने एक चीज उधार ले ली है। वो है, क्या टॉक उधार ले ली है कि पुतली बाई जो थी, जो महात्मा गांधी की माता जी थी, उनके घर में जब बेटा पैदा हुआ तो वो कहने लगी कि मैं अपने बच्चे को बहुत महान बनाऊंगी। तो उनके पास एक उनकी सहेली आ गई, कहने लगी मेरे को बच्चे को बहुत महान बनाना है, तो कैसे बनाऊं। तो सहेली ने जवाब दिया कि तुम इसे जो सबसे महान है उससे मिला दो। तो उन्होंने पूछा सबसे महान कौन है। तो उन्होंने कहा भगवान सबसे महान है, तो उनसे मिला दो। तो बोले उनसे कैसे मिला दूं। बोले मंदिर ले जाया करो रोज, वहां रोज मिला दिया करो। तो वहां पे पोरबंदर में मंदिर काफी ऊंचे होते हैं, इससे 3, 4, 5 गुनी सीढ़ियां होती हैं। तो जैसे ही वो चलने के काबिल हुई, बच्चे को लपेट लपूट करके वो रोज ले जाती, मंदिर में लेटा देती और प्रार्थना करने लगती। तो भगवान से उन्होंने उसका क्या करा दिया, दोस्ती करा दी। ठीक है, तो हमें तो मंदिर ले जाने के लिए इतना आया वाया बुलानी पड़ेगी, कौन इतना बोझा उठाएगा, है ना। फिर हम थक जाएंगे और हाथ में वो भी होगी, क्या होती है, फूलों की डलिया, पूजा के फूल। तो भाई इतना ले जा पाओ तो घर के मंदिर में बिठा दिया करो बच्चे को, जैसे ही जन्म होगा, जब प्रेयर कर रहे हो। तो ये शिक्षा हमें मिली। हो गई बात, चलिए खत्म। अब अंतिम बात, हम बच्चों को, आपके बच्चों को एक प्रार्थना कराते हैं, उसका नाम है I bear witness, oh my God, that thou hast created me to know thee and to worship thee. हिंदी,
मैं साक्षी देता हूँ मेरे परमात्मा की तुझे पहचानने और तेरी ही पूजा के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है। तो भगवान ने हमें दो बातों के लिए उत्पन्न किया है, एक तो भगवान को जाने और दूसरा है पूजा करें। पूजा करने का मतलब है उसकी आज्ञा माने। अब पूजा करने का मेरे दिमाग में एक उदाहरण है। एक थी टुनटुन, बहुत मोटी, उसके 12 बच्चे, करवा चौथ आया, उसने व्रत रखा, मारे भूख के तड़प रही, हस्बैंड लेट आए, 9:30 आए, चंद्रमा निकल गया था, 8:45 बजे 45 मिनट से तड़प रही है। वो आ ही गया तो कहने लगे, आ गया तू नाच पीटे, चल खड़ा हो जाए पटरे पर और तू भी खा ले, मैं भी खा लेती हूँ, मैं तो मर गई भूख से। तो कैसी रही पूजा ये? तो पूजा करने का मतलब होता है कहना माना। वो चलनी में देखा है अपने, तो दुल्हन देखती है सज धज के अपने, हाय ये तो कहना भी मानती है, पैर भी छूती है। तो पूजा करने का मतलब होता है प्रभु की आज्ञा को पढ़ना। वो भगवत गीता में लिखी है, कुछ धर्म की इसमें लिखी है, कुरान में लिखी है, किसी धर्म की बाइबल में लिखी है, उसे पढ़ना और उसे मानना। अंतिम बात है, एक स्टेशन रोड से माँ अपने बच्चे को लेके पिता जा रहे थे, तो वो मुझे देख के रुक जाते हैं। तो मैंने पूछा, दर्जा 2 में पढ़ता है, डी में, सेकंड डी में, बेटा प्रार्थना सुनाओ। सुना दी। अच्छा अर्थ बताओ। बोला भगवान को जानना, तो जानने को मैनिफेस्टेशन गॉड को जानेंगे। अच्छा तुम्हारे मैनिफेस्टेशन कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। तुमने कभी देखा है? बोले कभी नहीं देखा। हमने कहा तुम्हारे घर में कोई फोटो है? बोले कोई फोटो नहीं है। और कोई चित्र है? नहीं है। कभी तुमने उनके बारे में सुना है? हाँ हाँ। हम अच्छा फिर उसके बाद पूजा कैसे करते हैं? बोले माँ ऐसे ऐसे पूजा करती है, तो ऐसे ऐसे पूजा करते हैं। तो हमने कहा तुम्हारी माँ को तो नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हारी टीचर ने तो बताया पूजा करने का मतलब क्या होता है। बोले हाँ टीचर ने बताया था, टू ओबे द टीचिंग्स ऑफ गॉड। तो वो टीचिंग्स ऑफ गॉड कहाँ लिखी है? वो तो भगवत गीता में लिखी है। तुम्हारे घर में भगवत गीता है? मम्मी बोली वो तो नहीं है। तो हमने कहा देखो ये बच्चा सब तुम्हारे सामने क्या कह रहा है। जय राम जी की धन्यवाद। Thank you, respected Founder Director Ma'am, for your beautiful, astounding words of wisdom. Light is essentially a symbol of brightness and prosperity. It shows us the path of the future, so we usually believe. To make this occasion a blessed one, we look forward to rekindling of the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessings, I would like to invite our respected founder manager, respected founder director, dignitaries, and our lovely mothers to rekindle the lamp. I would urge all the beautiful mothers sitting in the audience to kindly join us for the rekindling of the lamp. Thank you. Mothers in the audience, I would highly request you to kindly join our respected founder director, founder manager on the stage for the lighting of the lamp. All the beautiful mothers, you are requested to please come up on the stage and join our respected founder director and manager and our respected principal ma'am for lighting this beautiful lamp of knowledge and wisdom today. Spread
mothers, we request you to kindly join up on the stage. Forever and ever, forever and Our beautiful mothers are sitting in the audience. I request all of you to please join us on the stage. spread far all over the world for peace and harmony. May the Lord keep this light always burning forever and ever. May this light spread far over the world for peace and harmony. May the I would request all the mothers to join us on stage. सारी mothers जो आज present है, मैं सबसे request करती हूँ कि आप stage पे आइए. Join us for the lighting of the lamp and a group photograph. I request all the mothers to join us on stage. It will be a great honor for us. Dear mothers, as requested by our respected principal ma'am, we expect all of you to join us for the beautiful and a pretty photograph with our founder, manager and director. all over the world for peace and harmony. Also, I would like to tell you, dear mothers, that you keep remaining on the stage and do not leave until the photograph is done. Always burning forever and ever. All the lovely mothers sitting in the audience, please join us on the stage. Spread far It would be a beautiful moment for all of us if you join us here with the founder, manager and director for a beautiful and a lovely photograph. may the Lord keep this light always burning forever and ever, forever and ever, forever and ever.
request all the mothers to kindly take the seats. All the mothers are requested to please kindly take your seats in the auditorium. All the mothers are please requested to kindly take your seats in the auditorium. Darkness cannot drive out blackness. Only light can accomplish so. Let us hope that the brightness of education overcomes the darkness of divisions, injustice, aggression in the society, and leads us to growth, equality, and liberty. Music gives us soul. Every religion has its set of prayers, and they are related to the supreme power God. By reciting prayers, we find peace and happiness. But we must be respecting those who are different from us, who follow different faith and tradition than us. But we must ensure the religious sentiments of all the religions stay intact. Therefore, to praise the beauty of all religions, we conduct an all-religion prayer. Now, the students of pre-primary section will show the all-religion prayer. Thank you. Dear parents, our country is a home to many religions. All the religions speak the goodness of truth, moral living, and compassion. So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole earth. We are now going to have the all-religion prayer by the students of the pre-primary section. We await your patience. सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम्ही के वैया तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज लीला पर पार तेरी तुम चोर कहावे भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे तू का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा कसैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाच सबका कातिया अर्जियां सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ तुमसे क्या मांगूं मैं तुम खुद ही समझ लो मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे मादे मौला मरम्मत मुकद्दर कर दो मौला मेरे मौला तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना मरम्मत मुकद्दर कर दो मौला जो भी तेरे दर आया चुपने जो सर आया मस्तियाँ पिए सबको ढूंढता नजर आया प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया नूर की बारिश में भीगता सदर आया मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री नानक आया कल तारन गुरु नानक आया नानक आया कल तारन गुरु नानक आया चलो चल रे मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने चलो चल पक्सा घर मिल तरिए कल युग तारन आए ने सतगुरु नानक आए ने सतगुरु नानक आए ने चलो चल रे मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने चलो चल गुरुआ दा लड़कड़ियां च कण कण विच समाए ने चलो चल गुरुआ दा लड़कड़ियां च कण कण विच समाए ने सतगुरु नानक आए ने सतगुरु नानक आए ने चलो चल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने चलो चल पैसा घर मिल करिए कली मारन आए ने My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong
so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do for you. की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध ने मानव हित में किया उस कार्य का उत्तम क्या कहना। हित ही उनका था जीना, जनहित ही उनका था मरना। चिर सत्य हिंसा शांति में चारित्र्य हमारा हो कहना। ज्ञान की ज्योति अखंड जलती, दमके सारी जगती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं भी
ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु चाहे कहो श्री मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु चाहे कहो श्री राम मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम सबसे प्रभु का प्यारा नाता वो ही पिता है वो ही है माता मंदिर मस्जिद या गिरजा घर सभी प्रभु के धाम सब धर्मों को प्रेम सिखाता सबको सच्ची राह दिखाता दूर किया करता है दाता सबके कष्ट तमाम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु चाहे कहो श्री राम I think your parents, these little ones, deserve a far more thunderous round of applause than this. Can we have a huge round of applause for our tiny ones? It is absolutely veracious that all the religions have equal paths to the same God. Therefore, to honor the sanctity of all the religions, CMS has always been conducting the All Religion Prayer. The Lord keeps us all those whom we love, and whether here or in some other place, may God be our companion, as friend, as we walk together through all the days of our lives. May we find the welcome of God's love. Music touches us emotionally, where words alone can't. And into the music, dear parents, we always lose our soul. Music creates a social cohesion. It speaks to all when words fail. And wherever you go in the world, music is always understood. It's a universal gift and its power to connect people without question. Certainly, music is an art form with human interaction at its center. Let us now, dear parents, indulge ourselves in the melody of the choir performance, which will be presented by our beautiful and lovely mothers. Let us welcome our mothers for the choir performance.
such a refreshing experience. Can we have a thunderous round of applause for our dear mothers who have worked so hard to prepare this beautiful and mesmerizing song for us all. Dear parents, we have just found a lost key. If it belongs to someone, kindly collect from me. We have just found a lost key of Honda Activa. If it belongs to someone, kindly please collect it from me. Thank you. Our dear mothers being captured with our lovely founder director and respected principal ma'am. What a lovely and beautiful moment this is. And here we have our founder director honoring our dear and beautiful and lovely mothers for the beautiful song performance that they just gave. Thank you so much, founder director ma'am, for honoring our mothers. What a vivacious moment for all of us. Can we have a little scene and enthusiasm in the auditorium? Can we have a round of applause here? Audience in the background, we can't hear you. Director now for honoring our mothers. It was lovely having you. We extend our warm gratitude to all our beautiful mothers again for that beautiful song performance that they just gave. Dear audience, is just the beginning. There are yet more mesmerizing performances to captivate your attention. Kids, they dance before they learn there is anything that isn't music. The upcoming performance is truly going to be a delight. And it will cheer you up. Let's welcome
our tiny tots from the pre-primary section for some foot tapping. Let's groove to some music, dear parents, and let's enjoy this evening. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I'm looking backward and I
him, he rewards me. 'Cause he loves me. God made me, he made everything. God loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me. 'Cause he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me. 'Cause he loves me. 'Cause he loves me. 'Cause he loves me. Can we have a huge round of applause, dear parents, for our beautiful and lovely tiny tots for a pretty dance number that they just gave. What a beautiful and mesmerizing performance we just had, dear parents. Salute our little ones. We salute our bright and poppy young kids for giving such a beautiful and lovely dance number right away. Music doesn't get in. It's already inside us. It uncovers what is there, makes us feel various kind of emotions that are hidden deep within. The heartbeats might have certainly gone up, and I'm sure everyone in the audience is eager to sink in the depths of the music now. With a huge round of applause, let's welcome our talented children for a mesmerizing and soul-soothing choir performance. Let's warmly welcome our tiny tots for the choir performance that I'm sure will tickle your ears.
Take your position, children, for song. Rajam sir. One, two, three, four, five, six, seven, eight. I believe it's not too late. Together we can change the world. Lay down all the pieces out. Find out what it's all about. Together we can change the world. Can't do it by myself, so I'm asking for your help. Together we can change the world. There's progress been started. All of these are let's get started. Together we can change the world. Together we can change the world. Put our hands and raise our hearts. We can dare to make a start. Together we can change the world. Watching this work with one voice, knowing that we have a choice. Together we can change the world. Can't do it by myself, so I'm asking for your help. Together we can change the world. Till my prayer has been started, roll your knees up, let's get started. Together we can change the world. Together we can change the world. Change your mind and change your life. Let the light of fear us right. Together we can change the world. When we open up our eyes and we start to realize. Together we can change the world. Can't do it by myself, so I'm asking for your help. Together we can change the world. This our prayer has been started. Roll your sleeves up, let's get started. Together we can change the world. Together we can change the world. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I believe it's not too late. Together we can change the world. Lay down all the pieces out. Find out what it's all about. Together we can change the world. Can't do it by myself, so I'm asking for your help. Together we can change the world. This our prayer has
What a mesmerizing performance, dear parents, and so rightly sung by our little ones that together only we can change the world. And steadfast unity is what we seek. Many of the challenges faced by the humankind today are climate change, water scarcity, inequality, and hunger that can only be resolved at a global level by promoting sustainable development. Our commitment to social progress, environmental balance, and economic growth. Education is one way we try to achieve that. Education for sustainable development empowers learners with knowledge, skills, values, and attitudes to take informed decisions and make responsible actions for environmental integrity and economic growth. Education for sustainable development allows every human being to acquire knowledge, skills, attitude, and value necessary to shape a sustainable future. Let us witness how being united can help us attain that. The history of Oceania signifies partnership and unity. Most of the educational institutions of Oceania provide free education to its entire population, striving towards a better world. Holy education can lead us to unity and peace. It is also helping United Nations in achieving its goal of building where no one is left behind, which is only possible with strong global partnership and cooperation. May unity prevail in Oceania. May unity prevail in all the countries of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth.
village and manifold consisting a mixture of various unique tribes. Education system is rapidly progressing in Africa. Education is a key to escaping poverty. The goals set by United Nations aim to put an end to poverty at all the levels in all the nations. May unity prevail in Africa. May unity prevail in all the countries of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. South America is a land of many educational institutions and people belonging to various races. The great aim of education is not knowledge, but action. The holistic education aims at connecting hearts through education. The goals set by United Nations is to ensure healthy lives and promote well-being for all at all stages. May unity prevail in South America. May unity prevail in all the countries of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. North America is a continent of arts. Learning centers of North America are hubs of peace and unity. North America is teaching the world to move towards universality and inclusivity. The global goals set by United Nations aim to ensure inclusive and equitable education and promote lifelong learning opportunities for all. May unity prevail in North America. May unity prevail in all the countries of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. The European countries are ranked the topmost in terms of quality education. They believe in delivering quality education to all the citizens of the world. Today, the most urgent requirement is spiritual education, which is imbibed in holistic education. To protect the well-being of children, they have access to continued learning. The United Nations aims
aims to provide good quality education to all the citizens. May unity prevail in Europe. May unity prevail in all the countries of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. Asia is an epitome of unity and diversity. The educational centers here serve as a place to receive unified education for all races and religions at all levels. The principal reason for the fall of people is ignorance. Education awakens every mind and encourages building a world free of all. The United Nations too aims to build conflict-free, secure, strong institutions and unlimited access to justice for sustainable development. May unity prevail in Asia. May unity prevail in all the countries of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. I am an aware, powerful and empathetic world citizen. I know that the world is a family which needs unity for strength. I envision a future where we get quality education. Our nation achieves prosperity and success only when it carries forward holistic educational approach. I pray for the literacy and equality in all the countries of the world. May unity prevail in all the countries of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. I am a representative of United Nations organization. It is working to achieve sustainable development goals, which are a universal call to put an end to poverty, protect the planet, and to improve the lives of everyone everywhere. It works to make this planet even more beautiful and sustainable. May unity prevail in all the continents of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing the fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this hearing storm?
first showcase that without unity, nothing can be achieved. The greatest strength of mankind rests in steadfast unity. And where there is unity, there is always victory. World unity helps us to enlighten, empower, and inspire. We must stand together because unity not only gives us power, strength, courage, but it is also needed for our survival. We imagine a world today where unity equals guidance and proper growth, and it will help us to lead a peaceful life. With millions and millions of hearts unite across the world with compassion, vision, and common sense, it will call upon divinity. Nationalism is a psychological aberration. Our most serious problems have no borders. Such issues can only be solved by viewing humans as one species, without borders and without any boundaries, dear parents. That is why at CMS we always envision for world unity. Dear parents, CMS has always believed in philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. It has believed in the oneness of mankind. We believe that our world is nothing but one family, dear parents. We at CMS believe in creating the students as total quality individuals and the children who are ready for tomorrow. The children who are ready to face all the challenges and all the problems by themselves. I would now request our honorable and most respected founder manager, who needs no introduction and has always been carrying forward the legacy of Jai Jagat, that is oneness of the mankind. We request our respected founder manager to kindly grace the audience with his words of wisdom and motivation. Dear sir, I would urge you to please motivate our dear audience. पहले तो सबसे पहले तो मैं कोमल बालेचा जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम बच्चों का करवाया और अभी कई कार्यक्रम बाकी भी हैं। बच्चों की वर्ल्ड पार्लियामेंट में जो बच्चे बोले हैं वो उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट थी, फ्लॉलेस थी और बोल्ड थी, ल्यूसिड थी, एक्सप्रेसिव और उनका एलोक्वेंस बहुत अच्छा था। तो जितनी भी बधाइयाँ प्रिंसिपल दीदी को और टीचर्स को दी जाएं बच्चों को तैयार करने के लिए वो बहुत कम होगी। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कोमल बालेचा जी को और उनके सारे टीचर्स को जिन्होंने बच्चों को तैयार कराया। और भी कार्यक्रम जैसे सर्वधर्म प्रार्थना, वर्ल्ड यूनिटी की प्रेयर और जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हुए वो बहुत ही आश्चर्यजनक और उत्साहवर्धक थे। बच्चों में प्रेरणादायी थे बच्चों के लिए और बच्चों को मार्गदर्शन देने वाले थे। वर्ल्ड की पार्लियामेंट थी पारिवारिक एकता पर, फैमिली यूनिटी पर, और इसकी आज बहुत ज़रूरत है फैमिली यूनिटी की। परिवार में एकता हो, पति और पत्नी, पिता और पुत्र, माता और बेटा बेटी,
ये सब मिल के प्यार से घर में रहें। तो ये जो पारिवारिक एकता का कार्यक्रम आपने वर्ल्ड पार्लियामेंट कराई वो बहुत एक यूनिक थी, बहुत ही अच्छी थी। और संसार के किसी भी स्कूल में, किसी भी कार्यक्रम में कभी भी पारिवारिक एकता पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया किसी भी स्कूल ने। तो ये पहला स्कूल है जिन्होंने पारिवारिक एकता पर इतना बड़ा एक कार्यक्रम किया। इसके अलावा सर्वधर्म प्रार्थना। सर एक अनाउंसमेंट का। हाँ कर दीजिए। All my lovely parents, we still have more programs to go, and I would definitely like to say that you should be awaited for the grand finale. I would request all the parents to kindly be seated. All the students will be dispersed only after the grand finale and after the national anthem. And after the national anthem, you all will receive your report cards. So kindly have a little more patience because we have many more programs awaiting for us. I would request all my lovely parents to cooperate as you always have been very cooperative. Kindly be seated, and I am sure that you all are going to benefit a lot from the golden words of our respected founder manager, sir. Thank you, parents. ये सर्वधर्म प्रार्थना बहुत आवश्यक है बच्चों को बताना प्रारंभ से ही कि ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं। जितनी भाषाएं जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और हिंदी और इंग्लिश और जितनी भाषाएं हैं इस संसार में, हर भाषा में उसका एक नाम है, लेकिन वो एक है, दो नहीं है। परमात्मा एक आध दर्जन नहीं है, एक भी है, एक ही है। परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती क्योंकि वो तो आत्म तत्व है। आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न तो तलवार काट सकती है, न पानी गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर और अमर है। तो परमात्मा आत्म तत्व है। एक मेरे पास तार है, इस तार का आप फोटो ले सकते हैं। इस तार को यदि पावर हाउस से जोड़ दिया जाए तो इसमें ऊर्जा आ जाएगी, और उसके बाद यदि ये प्लास्टिक भी उतार दें तो लोहे का वायर आएगा। लोहे के वायर का फोटो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो ऊर्जा है उसका फोटो नहीं ले सकते। उसी ऊर्जा से ये बिजली चल रही है, ये माइक बोल रहा है, उसी से ट्राम चलती है, उसी से अंडरग्राउंड चलती है, उससे बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन वो ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरह परमात्मा कण कण में व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। हवा में है, पानी में है, वो सूरज की किरणों में और पत्तियों में, बालू के एक एक कण में। तो परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती क्योंकि वो आत्म तत्व है। आत्मा तो अजर अमर है। और बाकी जितने अवतार आते हैं वो सब आते हैं परमात्मा से संदेश लाते हैं, मानव हित के लिए, मानव के कल्याण के लिए, युग युग की आवश्यकता के अनुसार युग युग में परमात्मा दिव्य ज्ञान उन्हें भेजता है। और वो दिव्य ज्ञान जिस भाषा में जहाँ जन्म लेते हैं उसकी जगह की भाषा में वो ज्ञान आता है, और फिर वो ट्रांसलेट होकर, अनुवाद होकर सारी भाषाओं में वो चला जाता है। तो वो जो दिव्य ज्ञान आता है युग, काल और परिस्थिति के अनुसार परमात्मा मानव के कल्याण के लिए भेजता है। और जितने भी अवतार आते हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं,
ईसा हैं, मोहम्मद हैं, नानक हैं, बाब हैं, बाउल्ला है, जोरास्टर है, मोजेज है, अब्राहम है, भगवान महावीर है, ये सब एक परमात्मा से आए, एक परमात्मा का संदेशा लाए। जितनी किताबें, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, किताबें अक़दस, किताबें अजावेस्ता, ये सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं, क्योंकि इनको भेजने वाला अलग अलग परमात्मा नहीं है। गीता को भेजने वाला परमात्मा अलग हो और कुरान को भेजने वाला कोई अलग है। परमात्मा तो एक ही है, दो है ही नहीं, अनेक है ही नहीं। उसको खुदा ने भेजा, कई लोग कहते हैं, और इसको परमात्मा ने भेजा। अरे भाई, ये अज्ञान है। खुदा या परमात्मा या ईश्वर तो एक ही बात है। तो ये सब नाम अलग अलग हैं। इस पानी को आप पानी कहें, जल कहें, वाटर कहें, आप कहें, तो सबका मानी तो एक ही है, पानी है। झगड़ा किस बात का है कि पानी अच्छा होता है, दूसरा बच्चा कहता है नहीं जी वाटर अच्छा होता है, उन दोनों में झगड़ा है। तो बच्चों को बताना है कि पानी कहो या वाटर कहो, बात तो एक ही है। खुदा कहो या अल्लाह कहो या परमात्मा कहो या गॉड कहो, तो सब एक ही बात है, दो नहीं है। तो जितने, जहाँ तक अवतारों का सवाल है, ये शरीर धारण करते हैं, इसलिए अपना संदेशा लाके दे देते हैं और इनको बहुत सताते हैं हम लोग, बहुत तकलीफें देते हैं। राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया कृष्ण को मारने के लिए, कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और बुद्ध को मारने के लिए अंजुलिमाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ईसा को मारने के लिए जीते जी उनके शरीर में बड़े बड़े हथौड़े लेकर कीलें ठोक दी गई, उन्हें मार दिया गया। और मोहम्मद साहब को 13 वर्षों तक मौत के साये में अरेबिया में, मक्का में जीना पड़ा, और एक रात को 13 वर्षों के बाद वो मक्के से मदीने गए। तो किलर्स ने जब देखा, क्योंकि उस दिन उन्होंने तय किया था कि आज मोहम्मद को मारना है, तो मोहम्मद कहीं दिखाई नहीं पड़े मक्का में। तो उनकी तलाश में किसी ने बताया कि वो मदीने की तरफ गए। तो मदीने की तरफ बहुत बड़ा दल नंगी नंगी तलवारें लेकर उनको मारने के लिए निकल गया। वहाँ किसी ने बताया, जो मोहम्मद साहब के साथ थे, कि पीछे बहुत बड़ा दल किलर्स का, मारने वालों का आ रहा है नंगी नंगी तलवारें लेके। तो बहुत सारे लोग उसमें से अबिसिनिया चले गए। इन लोगों ने अबिसिनिया तक पीछा किया। मोहम्मद साहब को 23 वर्षों में कुरान शरीफ नाजिल हुई। खुदा का पैगंबर आता, मोहम्मद साहब से कहता कि खुदा का ये मैसेज है, इसे नोट कर लो। तो मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास एक दो लोग थे जो कुछ जानते थे, उनसे वो कहते थे कि इसे लिख लो। तो वो भेड़ की सूखी खालों पर या ताड़ के जो पत्ते होते हैं, खजूर के सूखे पत्ते, वो मिल जाते थे, उन पर वो लिख ली जाती थी। 23 वर्षों में ये कुरान शरीफ पूरी खुदा ने नाजिल की। और जब ये इकट्ठी हुई तो कुरान शरीफ तैयार हुई। तो पहली आयत कुरान शरीफ की है कि खुदा रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुसलमीन नहीं है, केवल मुसलमानों का रब नहीं है, वो तो आलमीन का रब है, इस धरती का रब है। इस सृष्टि को बनाने वाला खुदा अल्लाह एक है, दो नहीं है। और सारे इंसान इस दुनिया के एक खुदा के बंदे हैं, एक खुदा ने सबको बनाया। तो कुरान शरीफ का मकसद है कि ये सब भाई भाई है और एक दूसरे से कोई नफरत
ना करे, ये कुरान का मैसेज है। तो ये 1400 वर्ष पूर्व आया। और उसके बाद नानक जी आए 900 वर्ष के बाद। तो नानक जी के पिताजी ने 20 रुपये दिए नानक को कि जाओ सौदा ले आओ, ताकि घर में आके बेचा करना तो कुछ इनकम आएगी। तो नानक जी गए सौदा लेने के लिए। रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोग मिले जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम 15-15 दिन से भूखे, हमें खाना नहीं मिला, हमारे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने 20 रुपये का सामान खरीदा, आटा और दाल वगैरह, और उसका लंगर बनाया और लोगों को खिला दिया। उन्होंने दुआएं दी कि नानक तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे एक दिन। जब वो लौट के आए तो पिताजी ने पूछा कि सौदा ले आए? हाँ पिताजी, मैं सौदा ले आया। तो बोले क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं आज सच्चा सौदा लाया हूँ। तो पिताजी ने कहा ये क्या होता है? कि पिताजी वो लोग गरीब थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तुम क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम भूखे हैं 15 दिन से। तो मैंने 20 रुपये का आटा खरीद के और चावल वगैरह खरीद के, दाल खरीद के लंगर बनाया और सबको खाना खिला दिया। और जानते हैं उन्होंने क्या दिया? मुझे दुआएं दिए कि नानक तुम इस संसार के बहुत बड़े इंसान बनोगे। पिताजी आप कहते हैं ना कि गरीब दुआएं दे दें तो परमात्मा उनको पूरी करता है। क्या इन गरीबों की दुआओं को परमात्मा पूरा करेगा? तो नानक के पिताजी ने कहा अवश्य अवश्य पूरा करेगा। और बेटे तुम मेरे घर में एक अवतार पैदा हो गए हो, संत ही नहीं बल्कि तुम एक अवतार हो। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे अंदर ये भावना आई कि भूखों को पहले खाना खिलाओ। तो तुमने ये बहुत बड़ा काम किया है और ईश्वर अवश्य उनकी जो दुआएं हैं उनको पूरा करेगा। तो नानक जी को ये मिला। नानक जी की मृत्यु के 300 वर्ष के बाद, यानी आज से 200 वर्ष पूर्व, तो बाउल्ला का आगमन हुआ ईरान देश में। 40 वर्षों तक उन्हें जेल में रखा गया। उनकी घोषणा करने के लिए कि नए अवतार आने वाले हैं, उसके लिए बाब आए, महात्मा बाब। उनको 20,000 उनके अनुयायियों को, फॉलोअर्स को कत्लेआम ईरान में कर दिया गया और उनको तरबीज के चौराहे पर खड़ा करके जो वहाँ के बादशाह थे नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने हुक्म दिया मिलिट्री को कि 750 मिलिट्री के जवान थे। उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनको गोलियां से भून दो और 750 जवानों ने एक साथ गोली मारकर उनको मार दिया। तो बहुत तकलीफ़ें हुई हैं। उनके जो घोषणा करने आए थे कि बाउल्ला आने वाले, बाब और बाउल्ला की कभी भेंट नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाब को ये एहसास हुआ कि बाउल्ला इस युग के अवतार हैं। उनके हाथों में रस्से बांध दिए जाते थे। तेहरान की सड़कों पर तांगे वाला घसीटता था और उनकी कमर पूरी छिल गई थी, घाव हो गए थे और उसमें लोग पत्थर मारते और उन्हें धूल मारते उनके ऊपर, इस आशा में शायद उन्हें जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। ये पापी है, ऐसा करके वो लोग मानते थे। इनको 4 देशों में देश निकाला हुआ, इनको डंजन में डाला गया जहाँ
राजा के महल का गंदा पानी आता था, बदबूदार, और उसमें छिपकली, सर्प और ये सब होते थे, झिंगुर, मच्छर और बेतहाशा बदबू। उसमें लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें गले में डाल दी गई, पैरों में डाल दी गई और वहाँ 3 महीने उनको रखा गया। वहीं उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है परमात्मा से, और तब वो कहते हैं, हे प्राणी, मेरा प्रथम परामर्श तुझे ये है कि तू एक शुद्ध, दयालु और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर, ताकि पृथ्वी का अनंत साम्राज्य तेरा हो। उन्होंने कहा, माई फर्स्ट, हे प्राणी, माई फर्स्ट काउंसिल इज दिस, possess a pure, kindly and a radiant heart, that thine may be a sovereignty, ancient, imperishable and everlasting. दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो गले मिलते हैं होली में और ईद में, तो उन्होंने कहा कि भैया गले मिलने से काम नहीं चलेगा, हृदय मिलाओ, और हृदय कब मिलेंगे, पवित्र होंगे। तो उन्होंने कहा, माई फर्स्ट काउंसिल इज दिस, possess a pure, kindly and a radiant heart. तो पवित्र हृदय होंगे तो मिल जाएगी। तो हृदय पवित्र हो, पति और पत्नी के, पिता हो पुत्र के, भाई हो बहन के, घर में दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सबके हृदय पवित्र हो जाए और मिल जाए तो घर में स्वर्ग आ जाएगा। और जरा भी किसी के दिल में मन मुटाव है तो घर में नरक हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। तो बाहुल्ला ने हृदय एकता की बात कही, ओ माई गॉड, यूनाइट द हार्ट्स ऑफ दाई सर्वेंट्स एंड रिवील टू देम द ग्रेट पर्पस, मे दे फॉलो दाई कमांडमेंट एंड अबाइड इन दाई लॉ, हेल्प देम ओ गॉड इन देयर एंडेवर एंड ग्रांट देम स्ट्रेंथ टू सर्व दी, ओ गॉड, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge, and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. तो बाहुल्ला ने इस युग के लिए ये भी कहा कि वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बनाओ। 200 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बनाओ, वर्ल्ड का एक कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाओ, वर्ल्ड की एक इकोनॉमिक ऑर्डर हो, वर्ल्ड का एक पॉलिटिकल ऑर्डर हो, वर्ल्ड की एक तराजू बाट हो, वर्ल्ड का एक सिक्का हो, एक नोट हो पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की एक भाषा हो जो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के साथ पढ़ाई जाए। उन्होंने कहा, स्त्री और पुरुष समान है, किसी को न तो स्त्री छोटी है न पुरुष बड़ा है, सब बराबर है। तो उन्होंने बहुत सारे नए नए नियम दिए और नई एक रचना की, और आज सारे संसार में बहुत तेजी से इनका शिक्षण बढ़ रहा है। और ये इनकी जो किताबें हैं वो दुनिया की हर भाषा में ट्रांसलेट हो गई हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रेंच में, रशियन में। कोई ऐसी दुनिया की भाषा नहीं है जिसमें कि भाई शिक्षाओं का अनुवाद न हुआ हो। तो वो तो बहुत सारी, तो यहाँ पर हमारी एक प्रार्थना है जो रोजाना हमारे बच्चे कहते हैं, आई वियर विटनेस, ओ माई गॉड, दैट thou hast created me to know thee and to worship thee. मैं साक्षी देता हूँ, हे मेरे परमेश्वर, कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। 2 काम के लिए हमारा आपका सबका जन्म परमात्मा ने दिया है। एक तो ये कि हम अपने रचनाकार परमात्मा को जाने, और दूसरा उसकी पूजा करें। अब ये जाने कैसे और पूजा कैसे करें?
जानने के मानिए उसकी शिक्षाओं को जानना, जो उसने युग युग में अपने दिव्य संदेश वाहकों के द्वारा या अवतारों के द्वारा युग युग में भेजी आज से 7,500 वर्ष पूर्व भगवान राम का आगमन हुआ और वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उन्होंने मानव जीवन को मर्यादित किया। मनुष्य का आचरण ऐसा न हो जो अमर्यादित हो जाए। मनुष्य का आचरण मर्यादित होना चाहिए। ये राम ने शिक्षा दी। उस युग की ये आवश्यकता थी, क्योंकि रावण जो सबसे बड़ा ब्राह्मण था और विद्वान था, वो भी पथभ्रष्ट हो गया और वो मर्यादा विहीन हो गया। तो उन्होंने सोचा कि यदि राजा मर्यादा विहीन होगा तो प्रजा भी मर्यादा विहीन हो जाएगी। तो इसलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मानव जीवन को मर्यादित करने की शिक्षा दी आज से 7,500 वर्ष पूर्व। राम की मृत्यु के 2,500 वर्ष के बाद, यानी आज से 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का इस धरती पर आगमन हुआ। दिव्य लोक से उन्हें गीता का ज्ञान मिला, जिसमें था न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अपने न्याय के वास्ते अपने बंधु को, अपने परिवारजन को भी दंड देना हो, दंड दीजिए। इसके लिए महाभारत की रचना करें। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ। अब एक अक्षौणी में कितने लोग होते हैं, लेकिन ये जाहिर है कि एक अक्षौणी में बहुत लोग होते होंगे। कितने हैं तो कोई नहीं जानता। तो इतने लोगों का नरसंहार कराया उन्होंने, खाली इसलिए कि न्याय नहीं होगा परिवार में तो परिवार नहीं चलेगा, समाज में न्याय नहीं होगा तो समाज मुश्किल हो जाएगा, शासन में न्याय नहीं होगा तो शासन नहीं चल पाएगा, विद्यालय में न्याय नहीं होगा तो विद्यालय चलना मुश्किल होगा, किसी फैक्ट्री या कारखाने में न्याय नहीं होगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। न्याय नहीं होगा तो अन्याय होगा और अन्याय होगा तो अव्यवस्था होगी। तो उस युग की आवश्यकता थी न्याय, तो उस युग के लिए न्याय की शिक्षा आई। और कृष्ण की मृत्यु के 2,500 वर्ष के बाद, यानी आज से 2,500 वर्ष पूर्व बुद्ध का आगमन होता है नेपाल के लुम्बिनी के वन में। और भगवान बुद्ध को दिव्य लोक से त्रिपिटक दिव्य पुस्तक मिली। त्रिपिटक में था कि सब बराबर है, ये ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था गलत है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये व्यवस्था मनुष्यों की बनाई है। परमात्मा ने सबको एक सा बनाया है, एक मिट्टी से बनाया है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीर। 5 चीजों से शरीर बनता है। मिट्टी, क्षित माने मिट्टी, जल पानी, क्षित जल पावक माने अग्नि और आकाश तत्व है इसमें। क्षित जल पावक गगन समीरा और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। और ये 5 तत्व इसी मिट्टी में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे जला दें चाहे गाड़ दें, तो उसी मिट्टी में 5 तत्वों में विलीन हो जाता है शरीर। तो ये जो 5 तत्वों का बना है मुख्यतः मिट्टी से बना है। मिट्टी सबकी एक सी है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सक्सेना है, न श्रीवास्तव है, न शर्मा है, न वर्मा है, न यादव है। मिट्टी जो होती है एक समान है, उस मिट्टी से बने हैं। तो बुद्ध ने यही कहा कि सारे प्राणी एक मिट्टी से बने हैं। तो ये ऊंच नीच और ये जाति पाति ये सब गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों को ये बातें अभी से सिखाना बहुत ज़रूरी है। और सब एक परमात्मा ने बनाए और सब
एक सी मिट्टी से बने। और बुद्ध की मृत्यु के 500 वर्ष के बाद, यानी आज से 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह का जन्म होता है। उन्हें कीलों से ठोक दिया गया, बड़े बड़े हथौड़े लेकर लोग आए और कीले उनके शरीर में ठोकने लगे। तो वो उस समय प्रार्थना कर रहे थे, हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे, क्योंकि तो अबोध और अज्ञानी है, ये अपराधी नहीं है। इनके माता पिता ने, इनके शिक्षकों ने इन्हें परमात्मा का और आत्मा का ज्ञान ही नहीं कराया, ये तो अज्ञानी है। तो ये माफ किए जाएं, परमात्मा ने उन सबको माफ कर दिया और ईसा स्वर्ग सिधार गए। तो ईसा की मृत्यु हो गई। ईसा की मृत्यु के 600 वर्ष के बाद यानी आज से 1400 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। और जैसा कि मैंने बताया, उन्हें बहुत तकलीफें दी गई। वो गरीबों बारबरस जंगली ट्राइब्स ऑफ अरेबिया गरीबों की बहू बेटियों को ले जाएं, उनके बच्चों को ले जाएं, उनके पशुओं को ले जाएं, उनके साथ बदसलूकी करते थे, उनके साथ अन्याय करते थे। मोहम्मद साहब उन्हें बचाते थे। तो वो कहते थे कि क्या तुमने कोई ठेका लिया है इन गरीबों को बचाने का? तुम कौन होते हो, हम तुम्हें मारेंगे। तो इसलिए मोहम्मद साहब का जीवन बहुत ही एक कठिनाइयों में 13 वर्षों तक मौत के साए में वो जिए मक्का में। और जैसे कि मैंने बताया, वो उसके बाद बहुत तकलीफें हुई। 23 वर्ष में कुरान शरीफ नाजिल हुई। और उसका मतलब यही कि खुदा रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुसलमीन नहीं है, मुसलमानों का रब नहीं है खाली, बल्कि वो धरती का रब है, सृष्टि को बनाने वाला खुदा एक है। और उनकी मृत्यु के 900 वर्ष के बाद, यानी आज से 500 वर्ष पूर्व, गुरु नानक देव जी का आगमन होता है। और वो उन्हें दिव्य लोक से गुरु ग्रंथ साहब मिला, जिसमें था अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और नानक नाम चढ़ती कला कब, जब तेरे भाने सर्वत्र दाबला। नानक का नाम तुझे ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग है, लेकिन एक शर्त है, कब, जब तेरे बाने सर्वत्र दाबला, तेरे हृदय में संपूर्ण मानव जाति की भलाई की भावना होगी तब। और नानक की मृत्यु के 300 वर्ष के बाद, यानी आज से 200 वर्ष पूर्व बाउल्ला का जन्म होता है। और बाउल्ला ने इस युग के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी वो दी 200 वर्ष पूर्व। और इसके बाद आप देखें तो 1914 से 1918 तक प्रथम महायुद्ध हुआ। और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बना, जिसकी वजह से 20 साल तक वो युद्ध रुका रहा। उसके बाद आप देखें तो 1918 से लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई, जो 1945 तक चली। बहुत ज़्यादा लोगों का विनाश हुआ, बहुत लोग मारे गए, और ये 45 से चली। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना, संयुक्त राष्ट्र संघ, और 76-77 वर्ष हो गए 45 के बाद से, अभी तक तो कोई तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ। लेकिन इतने अस्त्र शस्त्र और न्यूक्लियर बम और न्यूट्रॉन बम सारे दुनिया ने बना लिए, और कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, और ये छिड़ेगा तो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हो जाएगा। उसके मानी है कि दुनिया में कोई नहीं बचेगा, बहुत बुरी हालत होगी। अभी पुतिन ने, जो हम रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर 1 साल हो गया, और 1 साल से ये हमला किया हुआ है। और
एक साल पूरा हो गया 24 फरवरी को, और आज आप ये समझिए कि फरवरी की 28 निकल गई, आज 2 मार्च आ गई है, तो 24 फरवरी को एक साल हो गया, लेकिन फिर भी वो युद्ध कर रहे और लाखों लोगों को मार दिया। देखिए, एक पुतिन की वजह से सारी दुनिया में महंगाई बढ़ी, सारी दुनिया में एक अव्यवस्था फैल गई है। एक पुतिन, उसको अच्छी शिक्षा बाल्यावस्था में नहीं मिली तो वो दुर्दांत बन गया, लाखों लोगों को उसने मार दिया, लाखों घर तबाह कर दिए, तो कितना बर्बादी की है। तो इसलिए ये आज ज़रूरत है कि जो बाहुल्य ने कहा है उसकी आज ज़रूरत है। और इसीलिए यहाँ पर देखिए वर्ल्ड की पार्लियामेंट बच्चों की कराई गई, ताकि बचपन से उनके माइंड में ये चीज़ बैठे कि हमें बड़े होकर वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी है, ताकि वर्ल्ड की व्यवस्था बनानी है, वर्ल्ड की एक व्यवस्था बने और सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान मिले। और उन्होंने कहा कि ये हमें वर्ल्ड सर्वधर्म प्रार्थना सिखाई, ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है, सारे अवतार एक परमात्मा की ओर से आए। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, किताबें अक़दस, किताबें अजाविस्ता, ये सब एक परमात्मा से आई है, क्योंकि परमात्मा एक ही है, दो नहीं है, अलग अलग परमात्मा ने नहीं भेजी। कुरान खुदा ने नहीं भेजी और गीता भी खुदा ने भेजी है। तो कुरान और गीता सब एक परमात्मा से आई है, क्योंकि परमात्मा एक ही है, दो है ही नहीं, अनेक है ही नहीं। तो ये बातें भी बच्चों को अभी से बताना ज़रूरी है कि धर्मों के नाम पर जो दूरियां हैं वो केवल अज्ञानता के कारण है, केवल डार्कनेस और इग्नोरेंस है, और कोई उसमें चीज़ नहीं है। तो बच्चों को दूसरे बच्चों को वर्ल्ड यूनिटी का ज्ञान कराना ज़रूरी है। यहाँ एक बालक है, इस बालक के नीचे लिखा है ए चाइल्ड और यूथ इज द होप एंड प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। यही आशा की किरण है और ये प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर है। भविष्य में ये क्या बनेगा, इसके मस्तिष्क में कौन से विचार माता पिता ने और टीचर्स ने भरे हैं, उसी तरह का ये बालक बन जाएगा। यही प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर है। If one child or youth is made a total quality person, TQP, he can change the world and unite it. Total quality person और total quality manager में इतनी qualities हो, material, human और divine education तीनों मिले। ये बालक कह रहा है कि I am a material being, I am a human being, I am a divine being. सबसे पहले मुझे उच्च कोटि की मैटेरियल एजुकेशन मिले, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, लैंग्वेज, लिटरेचर, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेस, कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले मैटेरियल एजुकेशन मिले ताकि मैं बड़े होकर अपनी आजीविका कमा सकूं और अपना परिवार का भरण पोषण कर सकूं और अपने माता पिता जो वयोवृद्ध हो जाए उनकी भी मैं सेवा कर सकूं। दूसरी चीज़ कि मैं एक परिवार का सदस्य हूँ। परिवार लघु समाज है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी है। तो परिवार में मैं किस तरह से रहूँ कि मैं सबका प्रिय बनूँ, माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन, बराबर वाले भाई बहन, छोटे भाई बहन, इन सब का मैं प्रिय बनूँ। तो मुझे ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि मैं एक अच्छा परिवार जन्म लूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो इस सारी दुनिया को एक कर सकूं। One day I will unite the world with the help of balanced education of all the three realities of life. और तीसरी चीज़ है डिवाइन एजुकेशन। मुझे दिव्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान भी मिलना चाहिए ताकि मैं वही काम करूं जो ईश्वर की इच्छा के
अनुकूल हो, कोई ऐसा काम मुझसे न हो ये ईश्वर की इच्छा के प्रतिकूल। अब इसको मैटेरियल, ह्यूमन और डिवाइन तीनों तरह की एजुकेशन देना जरूरी है। गॉड इज वन, रिलीजन इज वन, मैनकाइंड इज वन, ये बच्चों को शिक्षा देना है। पहले गुड बनाए तब स्मार्ट बनाए। यदि हम पहले गुड बनाए, मैंने गॉडली बनाए और फिर स्मार्ट बनाए, तो बच्चा क्या बनेगा? प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति का गौरव बन जाएगा। और क्या बनेगा? गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड, पूरी मानव जाति के लिए ईश्वर का उपहार बन जाएगा। और क्या बनेगा? पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती की रोशनी बन जाएगा। इसके लिए नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्वेंट स्पीच, ये 4 पिलर्स ऑफ सीएमएस एजुकेशन है। पहली चीज है नॉलेज, रटा हुआ ज्ञान नहीं, समझा हुआ ज्ञान। और उसके बाद प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसी ऑफ सिचुएशन इज द विजडम ऑफ मैन। तो विजडम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली। तो ये जो नॉलेज प्राप्त की है उसका एप्लीकेशन, इसे विजडम कहते हैं। फिर तीसरी चीज है शरीर हमारा भौतिक है, हमारी सोच आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल परसेप्शन हो। और चौथा है एलोक्वेंट स्पीच, और इसके लिए तो हम यहाँ की प्रिंसिपल दीदी को और यहाँ के टीचर्स को बधाई देना चाहते हैं कि बच्चों को बहुत ही एलोक्वेंट, फ्लॉलेस एंड फ्लुएंट स्पीकर बना रही है। यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, एक्सीलेंस इन ऑल थिंग, ये फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीनियर्स एजुकेशन। ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, विश्वव्यापी जानकारी बच्चों को कराई जाए। आज यहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट के जरिए विश्वव्यापी जानकारी। सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, पूरी मानव जाति की सेवा की भावना। एक्सीलेंस इन ऑल थिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों को सिखाया जाए, निगेटिव एटीट्यूड उनके न बनने दें। लीडरशिप स्किल उनमें और फुल कमिटमेंट एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट, पूरे मनोयोग से अपना काम करें। बच्चों को एजाइल और एक्टिव बनाएं, फार साइटेड और विजनरी बनाएं। गोल सेटिंग कॉम्पिटेंसीज बच्चों में डेवलप करें। अल्टीमेट गोल, लॉन्ग रन गोल, शॉर्ट रन गोल, इमीडिएट गोल, goal at hand. All the goals of life should be connected to each other. Humble and tolerant. Humility exalteth man to the heaven of glory and power, while pride abaseth him to the depth of wretchedness and degradation. तो बच्चे को humble बनाए और विनम्र बनाए और tolerant. God will increase the reward of them that endure with patience in the path of God. If anyone revile you or trouble touch you in the path of God, be patient and put your trust in Him who heareth and who seeth. तो humble and tolerant बनाए, self discipline बनाए, स्वयं अपना डिसिप्लिन हो, इमोशनली स्टेबल, फ्लेयर अप न करें बच्चे, नोबल एंड लॉ अबाइडिंग, कंसल्टेशन सिखाएं, परामर्श करना, बहस करना नहीं। बहस और मुबाहिसे में ईगो आती है, तो परामर्श हो। It should be loving, it should be in a prayerful mood, it should be for the happiness of God. तो कंसल्टेशन, परामर्श प्रेमपूर्ण हो, ईश्वरीय वातावरण में हो, और जो भी निर्णय करे वो ईश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। स्ट्रॉन्ग विल पावर, बच्चे को बचपन से ही बड़े हौसले, बड़े काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करना चाहिए। लॉजिकल टेम्परामेंट बच्चे का बनाए, क्यूरियस और इमेजिनेटिव, हर चीज़ को जानने की उसमें जिज्ञासा हो, इमेजिनेटिव बनाए और ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट बनाए। यहाँ एक बल्ब है, पावर हाउस से जुड़ गया तो रोशनी आ गई, तार टूट गया तो अंधेरा आ गया। एक माता पिता ने अपने बच्चे को इस दिव्य लोक से जोड़ दिया, उस परमात्मा से जहाँ से गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, किताब एकदस, सब कुछ एक ही परमात्मा से आया है। तो बच्चा क्या बनेगा? रैशनल, विचारवान। और क्या बनेगा? वाइज, बुद्धिमान। और क्या बनेगा? गॉडली, ईश्वरीय। और क्या बनेगा? गुड, अच्छा इंसान। और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी पर्सन, TQP।
और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी मैनेजर, TQM, like a divine angel, a good human being is a blessing for human society. और कहिए तार टूट गया, माता पिता ने इस बच्चे को दिव्य लोक से नहीं जोड़ा, परमात्मा से, और टीचर्स ने नहीं जोड़ा, तो क्या बनेगा? इरेशनल। ये बच्चे क्या बनेंगे? अविचारवान। और क्या बनेंगे? अनवाइज, अबुद्धिमान। और क्या बनेंगे? अनगॉडली, अनीश्वरीय। और क्या बनेंगे? बैड, बुरे इंसान। और क्या बनेंगे? टोटली मिसगाइडेड पर्सन, TMP। और क्या बनेंगे? टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, TMM। लाइक ए एनिमल, ए बैड ह्यूमन बीइंग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। ये लाइक जानवर की तरह बन गए। ये दो बच्चे एक दूसरे का जबड़ा पकड़ लिया और गालियां भौंक रहे कुत्ते की तरह। यार इनका गुरु है बार्किंग डॉग, उससे सीखा है भौंकना कुत्ते से। तो जो बच्चे परमात्मा से नहीं जुड़ते वो ऐसे बार्किंग डॉग बन सकते हैं। बच्चे के 3 क्लासरूम हैं। पहला क्लासरूम घर है, होम, फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। दूसरा क्लासरूम स्कूल या यूनिवर्सिटी है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। और तीसरा क्लासरूम समाज है, थर्ड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। यहाँ पर आप देखें तो ये घर है, तो इसमें मम्मी है, पापा है, बेटा है और बेटी है। सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते, मिलजुल कर प्रगति करते हैं। इस घर में गीता भी है, कुरान शरीफ भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है। और इस घर पर दिव्य प्रकाश परमपिता परमात्मा का है। और जितने अवतार आए हैं उन सबकी पवित्र पुस्तकें और इस घर में है। स्कूल क्या है? स्कूल और यूनिवर्सिटी इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, guidance and leadership to students, their parents and the society in general. Let us make every child and youth both good and smart. और तो क्या बनेगा? गुड और स्मार्ट दोनों बनेगा। तो गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड, ईश्वर का उपहार बन जाएगा मानव जाति के लिए। और क्या बनेगा? प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति का गौरव बन जाएगा। एंड ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती की रोशनी बन जाएगा। इसके लिए नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन, एलोक्वेंट स्पीच, यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग, ये सब 8 गुण बच्चों को बताने चाहिए। बच्चों की पढ़ाई तो हो लेकिन प्रार्थना भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें सिखाई जाएं। और तीसरा ये समाज है, इस समाज में हमारे संत और महात्मा तरह तरह के टोपे टोपियाँ और साफे और तिलक छापे लगा के ये साबित कर रहे हैं कि हम कितने फर्क है एक दूसरे से। ये नहीं होना चाहिए। ऑल द इनकारनेशंस ब्रिंग मैसेजेस ओनली फॉर वन एंड द सेम गॉड। ऑल पीपल शुड प्रे टुगेदर सिंस देयर इज ओनली वन गॉड। एक ही छत के नीचे हो अब सब धर्मों की प्रार्थना, परमपिता है एक सभी का, सब में हो भावना। लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस मस्ट बी टॉट आर द अर्जेंट नीड of today's society. Basic principles of law, order and justice must be taught compulsorily from early childhood all over the world, and every child must be made law-abiding and orderly and just in other formative age. Gandhi ji ne kaha tha, if we are to teach the real peace in this world, if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children and youth. नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। पॉलो फेरी ने कहा था, एजुकेशन चेंज द पीपल एंड पीपल चेंज द वर्ल्ड। और विक्टर ह्यूगो ने कहा था, देयर इज वन थिंग स्ट्रॉन्गर देन ऑल द आर्मीज इन द वर्ल्ड एंड दैट इज एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। बैलेंस्ड एजुकेशन ऑफ ऑल द 3 रियलिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज मटेरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन, इज द आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। मैं एक बार पुनः अपनी प्रिंसिपल दीदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ
और अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत बच्चों के जीवन को सुंदर बना रही है और बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही है और बच्चों के ज्ञान में बेतहाशा वृद्धि आप कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, respected founder, manager, sir, for your kind words of wisdom. I'm sure the audience would have associated and related with the same, that it's important to have world unity at its center, and it's important to teach our little ones that how important it is and how significant it is to think that our world is nothing but one. Dear parents, we can't disagree upon a fact that grandparents had been providing us with the essential we need the most. Today we live in nuclear families, but earlier we were in joint setups, and the role of grandparents was the most significant. Grandparents offer us unconditional love, kindness, patience, and they provide us with the beautiful fond memories. And they also pass on some of the life's most valuable and important lessons to our younger ones. It truly would be unfair, dear parents, if we don't celebrate the victory and the presence of our grandparents in our lives. Well, it goes without saying, dear parents, that grandparents provide us with the wisdom from a lifetime of the experience, and it should never be undervalued. We here dedicate a beautiful Qawwali for our lovely grandparents who have contributed so much in our lives. A little more patience, dear parents, and then we will be cherishing a beautiful Qawwali song by our tiny tots, and you'll be so mesmerized by them. So we just expect a little more patience from you, and then we are going to soon witness a beautiful Qawwali performance.
also, dear parents, we are highly thankful and we are filled with gratitude with your presence. And also the grandparents who have accompanied today in the audience. So I would also urge our dear grandparents to stay with us because soon we will be celebrating your presence here in the auditorium. And I'm sure you're going to be mesmerized by the Qawwali performance presented by the pre-primary section from our school.
तभी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा खिवैया से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पापा, मेरे पापा। मम्मी तो दुनिया मेरी, पापा मेरे जहान, आप दोनों से प्यारा कोई जग में कहाँ। मेरा इंसाफ करना ऐ खुदा, माफ करना तुमसे पहले इबादत में इनका नाम लूं। दिल की आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया, दिल की आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया। मेरे अल्फाज दे दोनों को शुक्रिया, दिल की आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया। जो कुछ हूँ मैं इस जीवन में, आप दोनों का ये उपकार है। और कहूँ क्या, ये जीवन ही आप ही का एक उपहार है। दिल को समझा न पाऊं कैसे ऋण ये चुकाऊं, मुझको खुशियाँ दी सारी गम अपने नाम किया। दिल की आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया, तुम दोनों को शुक्रिया, तुम दोनों को शुक्रिया। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मालिक मेरे
auditorium to kindly join us on the stage. Your grandparents are requested to please join us on the stage for a lovely performance here with the kids. All the grandparents, you're requested to please join us on the stage. All the grandparents in the auditorium are requested to please join us. Thank you, grandparents, for joining us. You are truly a blessing in our lives. The importance of you goes without saying. And with your love and support, we constantly rise. Thank you so much, dear grandparents, for joining us for the occasion and blessing us with your presence. We are always grateful for our dear grandparents for blessing us with the wisdom and guidance. Grandparents, we cannot be thankful enough for your presence in our life and for teaching our kids about life and responsibilities. And now we are having a captivating moment wherein all our lovely grandparents are being captured with our respected founder, manager and director. Thank you so much, grandparents. We can't be thankful enough for your presence today. What a wonderful moment it is as we see all our lovely and beautiful grandparents standing with us and getting mesmerized. Thank you so much, grandparents, for being here today with us. Breathtaking moment for all of us as our respected founder, manager and our respected principal ma'am get clicked with our beautiful and lovely grandparents today.
now request all the grandparents to kindly be seated in the auditorium so that we can continue with the further proceedings. Dear grandparents, I urge you to kindly please take your seats in the auditorium so that we can begin further. I urge all the parents and the grandparents to kindly take your seats in the auditorium and fill the vacant seats, and please wait for the further proceedings. And here we have a pleasant moment where our founder manager is getting clipped with our respected principal ma'am and are accompanied by our lovely mothers. To be versatile and successful, one must be willing to have extreme focus and take risks when others won't. Our little wonders, that is, our all-rounders from class 2 and the kindergarten have been truly exceptional. We have been constantly seeing that these kids and the laurels from our campus have been adding feathers to the cap. Let's have a look now at the all-rounders from our campus. I would now request the all-rounder from class 2 and the all-rounder from the kindergarten section to be felicitated by our respected founder manager. I would urge our respected founder manager, our respected founder director, respected principal ma'am, and the mothers, in fact the proud mothers of those two beautiful all-rounders today, to get felicitated and honored. Dear parents, let's welcome with a huge round of applause the two beautiful wonders from City Montessori Rajajipuram Campus 3 for getting felicitated. Can we have a huge cheer in the auditorium, dear parents, for those lovely kids who have achieved more than anything? I would like to invite Mr. Kamal Zamani sir to please join us on stage and honor our all-rounder students. I would now like to announce the all-rounder from the kindergarten section, Rudran Srivastav, and the proud mother, Neha Srivastav, on the stage to be felicitated by our respected founder manager and our respected principal ma'am. Can we have the proud parents on the stage and the dear proud child who has achieved a lot for our campus? We must acknowledge parents that the child has been spectacular and has achieved more than accolades for our campus. Not a hope, not a wish, but a keen pulsating aspiration that has transcended everything. The little champion of kindergarten section B has been awarded as the all-rounder from City Montessori Rajajipuram Campus 3. And the child has emerged as a true inspiration for all the kindergarten students and has proved his mettle. Congratulations, Rudran Srivastav, for winning and achieving beyond everything. We are so proud of you.
Kudos to our star performer, and let's not forget to felicitate our lovely and dear proud parents. It's the hard work of the parents to upbring such a bright and a brilliant mind. Blessings to the child from our chief guest, and now the mother being felicitated by our chief guest and our respected principal ma'am. Such proud and miraculous moment for all of us. Let's not forget to applaud these children. Can we expect a huge round of applause again, dear parents, for this beautiful and brilliant mind standing right here and getting felicitated by our founder, manager, our chief guest, and our respected principal ma'am. And again, a proud moment where our student Rudran Srivastava getting clicked by the proud parents, our respected principal ma'am, and our very honorable chief guest. Again, a lovely moment where the child wants to deliver his feelings among us. Thank you, Principal Ma'am and Kalpana Ma'am. You are the rightful owner of this prize. Without your hard work, this is not possible. I will always try to meet your expectation. Thank you. The child has certainly way to go ahead in his life. Again, our respected ma'am, honoring the class teacher of KGB, the class teacher of Rudranj Avasi, the proud child who has achieved the all-rounder of the year from kindergarten section. Magic is believing in oneself. If we can make that happen, we can make anything happen. Dear parents, it's time now that we felicitate the all-rounder from class 2. Let's welcome with a huge round of applause the all-rounder from class 2. That is Mishika Nigam from class 2G. And let us welcome the proud parents as well. Ms. Disha Nigam, can we please have you on the stage, ma'am? Again, a proud moment for us, where Mishika will be felicitated by our most honorable chief guest and our respected principal ma'am. Patience and perseveration is what make kids like these. Optimism is the faith that leads to achievement, and Mishika has truly proved us that. Way to go, Mishika. We are truly, truly proud of you. Such a lovely moment again. And we can't wait to see that now the parent being felicitated by our respected principal ma'am. Congratulations, ma'am, for the lovely win. We are so proud of Mishika, and we are so proud of parents like such. Parents who have joined and who have worked hard, dedicatedly with their children. Now we have the father of our lovely all-rounder Mishika Nigam standing right with us and getting felicitated by our lovely chief guest. The starting point of all achievement is a desire, and Mishika has truly proved that for us. What a spectacular win, Mishika. Kudos to you and long way to go. Now we have, again, our respected headmistress ma'am being felicitated. Lovely and proud moment for all of us. Dear parents, can we have a huge round of applause? We have a lovely moment going on in here. We are truly thrilled to have children like Mishika and Rudranj among us who have proved their mettle time and again. We now see that the class teacher of Mishika Nigam being felicitated by our lovely respected principal ma'am. Thank you so much, dear parents. We are thrilled to have you, Mishika. I want to thank to Principal Ma'am, Meets Komal
Lalicha and my dear class teacher and my dear parents. They hardly work for me. So once again I want to thanks to them. They say, push yourself because no one is going to do it for you. Our little diamonds, Rudransh and Mishika, have taken all of us by surprise. And they are self-driven kids who are motivating the other kids and they are taking the lead. We are truly thrilled by the presence of our lovely all-rounders. In a country as diverse and culturally vibrant as India, it is perhaps the common simple expressions of color that hold together the various lifestyles and traditions. The symbolism of color stands out and controls every aspect of life in India, be it religions, festivals, and celebrations. India remains colorful and vibrant in more ways than one. It stands strong as an example of unity in the world. It's time now that we see the wonderful colors of India. Thank you. Dear parents, it's time now that we witness the beautiful colors of India. India which is diverse in its truest sense. An India that holds together all the religions and the cultures together. Time now to witness the wonderful and the magnanimous colors of India.
हो आज ब्रिज में है होरी रसिया, उतरे आए हैं कुंवर कन्हैया। आज बीच में है होरी रसिया, इतने आए हैं कुंवर कन्हैया। आज है दोनों रे दोनों मगन, राधा को अपनाने आए किशन। हंसी की धुन पे दुनिया थम गई, अपने पतन से गोपियों की खन गई। अभी की बरखा में सोरंगी डाला, सांवरी सी राधा सांवरे लाला। हरत पिचकारी वो करे खिलवारी, जाने न दूंगा तो है इस बारी। छोड़ी जग की सारी लाज, प्रीत की भाग चकी, प्रीत की भाग चकी। आसाम से गुजरात, बंगाल से महाराष्ट्र, हरी हरी उम्मीद है, आशा भरी सुरीद है, कश्मीर से मदरास तक, कहते सभी हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, What a magnanimous performance, dear parents. Can we have a louder round of applause now? We just saw and witnessed how the beautiful colors of India tie together as one. On that note, dear parents, the CMS fraternity wishes you a very bright and colorful Holi. We wish that this Holi remains the most beautiful Holi for you ever. Before we wind up, dear parents, I would like to tell you that the report cards of the students would be distributed from the basement area. The report cards for the pre-primary section would be collected from the basement rooms, whereas the report cards for the primary section, that is classes 1 and 2, would be distributed from the dining hall. I would now urge our respected headmistress ma'am to kindly propose the vote of thanks. Dear parents, I would like you to wait for 2 minutes.
Thank you so much. Jai Jagat everyone. A delightful evening to everyone present here. On behalf of students and staff of City Montessori School, Rajajipuram Campus 3, I deem it is a great honor to stand before you all to prepare the words of gratitude for being with us this evening and making us feel proud and more than all your love for us. Gratitude becomes love, love becomes devotion, devotion becomes surrender, surrender becomes faith. Faith reveals the divine. On this beautiful note, I express my sincere thanks for attending our first ever Divine Education Seminar and report card distribution of our newest campus of CMS Rajajipuram Campus 3. Respected founder manager, all esteemed dignitaries, parents and each and everyone present here, our students are moving at a fast pace to excel in each and every field, you name it, and they have achieved it. As our students are excelling and achieving the top rung, so is the development of our school infrastructure, which is expanding swiftly and steadily. From following new education policy to the development of play area to opening of new classes, classes 3, 4 and 5, we have come a long way in the past year. Many other advancements are going on in full swing in our campus, only for the betterment of our students. I wish all my students all the best for their future endeavors and hope they excel in all the fields they participate in. Thank you, Jai Jagat. The pain of parting is nothing to the joy of meeting again. It was indeed a delightful evening, all soaked in the delighted frame of mind. As we move towards the show finale, dear parents, we would like to thank each one of you to be present here, and we are likely to welcome all of you wholeheartedly for the news session. Thank you for joining us for this momentous occasion. Thank you, dear parents. Dear parent, there is a key which is left with me. Kindly please collect whosoever it belongs to.